थैंक यू सोनू भैया, भारती भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धा। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सोनू भैया। कैसे हो सोनू भैया? कैसे हो भारती भाई? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। मेरी बीपी आज बहुत ज़्यादा लो हो जा रही है रह रह के। मैं लाइव चालू करी, इतनी सुस्ती आई, मैं सो ही गई। खाना हुआ कि नहीं? आज खाना ही नहीं खाई भाई। खाना बनाने जा रही, सो के अभी उठ रही हूँ। नहीं भाई, खाना नहीं खाई थी, सच बता रही हूँ। खाना नहीं खाई थी आज। ये तो सुबह भी लेट उठी थी, इतनी टाइम भी अभी सो के उठ रही हूँ। देखा तो आप सो रहे थे तभी। हाँ वही तो कह रही हूँ, जैसे मैंने चालू किया लाइव, मुझे इतनी नींद आ रही ना। मैं सोचती बीपी लो होती तो ऐसे ही होता है, मेरी आंखें नहीं खुलती है। बीपी मेरी जब लो होती तो मुझे इसी से समझ जाती हूँ खाना क्यों नहीं खाती हो दीदी समय पर। सबसे ज्यादा आप खाना खाने में लापरवाही कर रही हो दीदी। लापरवाही नहीं भाई, होती है जब अंदर से परेशानी ना, तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे लग रहा है हमें जुकाम उखाम की क्या, जैसे कोई चीज जैसे स्वाद नहीं, कुछ खाए चिड़चिड़ा अलबत का हो रहा देखो के खाना होना, ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सच में बना है आज सोनू भैया, सच में बना है। बस 5 रोटी बना के हस्बैंड को दी है, वो लेके जा रहे हैं, वही बनाए हैं। खाता तो है ना कोई, अपने खाते हैं। एक बार बना लेते हैं, दोनों टाइम वही खा लेते हैं। आज वो वही ले जा रहे हैं ड्यूटी में भी, क्योंकि सब्जी नहीं बन पाई। मैं तो अभी सो के उठी हूँ। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। मैं हूं ना, आप आओ ना। आप तो हो लेकिन दूर हो ना, संभव नहीं है ना। थैंक यू सो मच भाई। छोटी की मन की बात है, वो कभी कभार खा भी लेती है उनके साथ, कभी कभार नहीं खाती है। कभी कहती है मैं छोड़ दी हूँ, कभी कहती है नहीं मैं भी खा लेती हूँ, और बाकी कोई नहीं खाता। नहीं भाई, कटोरा नहीं लेके आना है, आओ मिल जाएगा। उस दिन हस्बैंड थे नहीं ना, ड्यूटी थी उनकी जिस दिन आप थे। नहीं तो वो अच्छा बनाते हैं हस्बैंड। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। भारती भाई भी नहीं खाते हैं? अच्छा। थैंक यू सो मच। है भारती भाई, आप कुछ नहीं खाते हो? शाकाहारी हो? भारती भाई बताओ, आप शाकाहारी हो?
पहले बताते तो मैं ही बना देता। अच्छा अच्छा भैया, बताया नहीं कि मेरी दीवानी बना रही है। भारतीय भाई खाली देखते हैं। अच्छा, खाली देखते हैं, खाते नहीं है ना। भारतीय भाई खाली देखते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। भारती भाई बताओ, आप शाकाहारी हो क्या? बोलो भारती भाई। थैंक यू सोनू भैया जी भी। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो सर्वहारी हूँ। अच्छा, सर्वहारी हूँ। अच्छा भाई, सच्ची? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। मैं कुकुर का मांस खा लेता हूँ तो आप ही समझ लीजिए दीदी मैं क्या हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। ऐसा होता है सोनू भैया, बहुत लोग कहते हैं मैं नहीं खाता हूँ ना, और बहुत लोग सच में झूठ बोल जाते हैं। बहुत लोग खाते हैं और बताते नहीं खाता। सोनू भैया को मेढक का भी मांस खा लेते हैं। हाँ, बना मिल जाएगा, नहीं पता रहेगा तो खा ही लेंगे। मैं सच में नॉनवेज खाता हूँ दीदी। अच्छा भैया, जिसको अच्छा लगता है वो खा सकता है, जिसको नहीं लगता वो ना खाए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कभी। हाँ सोनू भैया। पापा गए? आज तो सब्जी नहीं तैयार हो पाई। अपना चिकन मटन जो भी है लेके जा रहे हैं। और आकाश, फ्रिज में से देना बेटा मटन निकाल के। थोड़ी हेल्प करवा लो, बाबू मटर छील ले बस। थैंक यू सो मच। अचार खाए हो आप? किस चीज का भाई, किस चीज का अचार? मटन निकाल के लिए छिलवा लो थोड़ा सा। बड़ा वाला कटोरा ले जाओ, वहीं बैठ के छिल लो हीटर के पास। छिल के फास्ट थोड़ा सा जल्दी कर। किस चीज का अचार बताओ?
लेकिन यदि एक तरफ चिकन बना हुआ है, एक तरफ मटर पनीर पूरी और सेवई तो मैं उस समय चिकन नहीं खाऊंगा। अच्छा, सेवई फेवरेट है। अच्छा भाई, सेवई फेवरेट है इसका मतलब आपका, और पनीर। ओके भारती भाई, मैं तो खा लूंगा। मैं तो खा लूंगा। अपनी अपनी पसंद होती है। हम तो ये दोनों में से कुछ नहीं खाएंगे। ना सेवइयाँ पसंद है, ना पनीर ही पसंद है, ना चिकन ही पसंद है। मैं तो कंपेयर करता हूँ कि कौन अच्छा रहेगा। कंपेयर ना किया करो भाई। मैं तो बहुत बार शादी विवाह में नॉनवेज बोलकर फंस गया हूँ। अच्छा, मुझे तो सबसे गंदा सब्जी लगता है, पनीर लगती है, से भी ना खाऊं। अच्छा, पनीर सबसे गंदी लगती है। मशरूम रहेगा तो खा लूंगा, चिकन छोड़ दूंगा। अच्छा, मशरूम पसंद है। नहीं, मशरूम की अच्छी सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी होती है। मैं तो मशरूम नहीं खाती हूँ भाई, लेकिन तरी वरी से खा लेंगे। वेरी नाइस। ये ना गाड़ी है। हाँ हाँ, देखा बहुत सुंदर बनाया। मैंने सिर्फ मजाक में लिया, इसने असली में बना के दिखा दिया मुझे। इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई। बोल दिया कि चिकन खा लूंगा और पता लगा कि बहुत अच्छा व्यवस्था था। अच्छा, इसलिए मैं पहले पता कर लेता हूँ कि कहीं तिलक या बारात जाता हूँ तो अच्छा। पहले पता कर लेता हूँ क्या बन रहा है, क्या खाना है। अच्छा, ये आकाश, आकाश, एक 10 वाले चॉकलेट लेके आना बेटा, मेरी बीपी बहुत लो हो रही है। बैठने का मन नहीं, सुस्ती बहुत आ रही है। थैंक यू सो मच सभी भाइयों का। एक बार मैं तिलक में खाने के बाद बहुत पछताया था चिकन खाकर। अच्छा, सिंपल खाना अच्छा बना था। पता लगा कि उससे कहीं अच्छा व्यवस्था था शाकाहारी का। मैं तो सब घूम कर सब घूम कर खाता हूँ, जो पसंद आ गया सब खा लूं, चीनी खा लूं। अच्छा,
आप घूमकर खा लेते हैं। जब जैसन तब तैसन, और भाई की मजबूरी ना समझे तो बहन कैसन। अरे अम्मी बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट बोल रहे हो, राइट। घुमतू सोनू भैया जी, घुमंतु सोनू भैया जी, अच्छा घुमंतु सोनू भैया। मैं 1 मिनट सब्जी धो के आ रही हूँ। आप लोग सोनू भैया आप बात करो।
थैंक यू भैया, दीपक भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? एक भाई की तरह कोई दोस्त नहीं होता और एक बहन की तरह कोई संरक्षक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तबीयत कैसी है आपकी कंचन जी? पहले से ठीक है दीपक भैया, लेकिन रह रह के बीच में फिर खराब हो जा रही है। क्या बताऊं, अब इन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जय भीम कंचन जी, जय भीम दीपक भैया, जय भीम। आप कैसे हैं और भाभी कैसी हैं? जैसे सबको दोनों आँख खास होते हैं, वैसे ही भाई बहन की यारी की खास होती है। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल बिल्कुल। समय कभी ऐसा आता है ना, तो भाई पिता बन जाता है और बहन माँ बन जाती है। फूलों का, तारों का, सबका कहना एक, हजारों में मेरी बहना है। थैंक्स थैंक्स भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहन के प्यार में बस इतना अंतर ही है कि रुलाकर जो मना ले वो भाई, और रुलाकर जो खुद रो पड़े वो बहन। क्या बात है। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है। हर भाई और हर बहन तेरी मेरी बनती नहीं, तेरे बिना मेरी चलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। झगड़ा हो जाएगा लेकिन शाम तक। बिल्कुल राइट। सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं, हम भाई बहन भी एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्या बात है। गुस्से में कही बातें जहर ना लगे, भाई बहन के रिश्तों को कभी नजर ना लगे। दिल से थैंक्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को समझने वाले जब होते हैं ना, तो किसी की नजर नहीं काम करती भाई। बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार नहीं मांगती, बड़े उपहार, रिश्ता बने रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कच्चे धागे की डोर का एक ऐसा नाता है, वक्त आने पर बहन के लिए भाई पिता और भाई के लिए बहन माता। वही तो बात मैंने भी बोली भाई, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। आज का दिन बहुत खास है, बहन के लिए कुछ मेरे पास है, उसके सुकून की खातिर ओ बहना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। दिल से दुआ है भाई, दिल से हमेशा ऐसे रहना, यही प्रार्थना है। और ये बहन भी आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहेगी, जब तक जीती रहे। ना रहे तो फिर उम्मीद ही क्या। तू ही मेरा यार है, तू ही मेरा संसार है, बहन तू ही तो सबसे अच्छा सच्चा प्यार है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, भाई बहन जैसा प्यार दुनिया संसार में कोई नहीं होता, कोई रिश्ते नहीं होते।
मेरी दोस्ती का इतना मान रखना बहन, खुशी में भूल जाना मगर गम में अपने भाई को याद रखना। मेरी दुआओं में हरदम तुम्हारा नाम होगा, जिंदगी के हर पल में तुम्हारा साथ होगा, चाहे कितनी भी आए मुश्किलें तुम्हारा भाई हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। बहनों को भी गर्व होता है जब ऐसे भाई होते हैं। अपनी दुआओं में मैं जो हमेशा आपकी जिक्र करता है वह भाई है जो खुद से पहले अपनी बहन की फिक्र करता है। बिल्कुल 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 राइट, बिल्कुल राइट भैया। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। जा सकते हो भारती भाई, सबसे पहले खाना बना लो, आप खा लेना। लाइव अभी चलेगी ऐसे, मैं भी जब तक काम करूंगी तब तक ऐसे चलेगी। खाना बना लेना और खा लेना, मेरा पूरा इजाज़त है भाई, इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको। खाना बना लो भारती भाई, मैं भी बना ही रही हूँ भाई। याद दिला दिए भाई, आंखों में आंसू आ गए, ये रोक लिया। आपकी तरह ना हमारा भाई भी हमसे हमेशा लड़ता था, जब बैठ जाऊं तो बोलता था एक ही शब्द, रोएगी जिस दिन नहीं आऊंगा तेरे घर। हमेशा के लिए रुला के चला गया भाई, क्या करूं। दीदी मैं भी अपना इस आईडी पर 4 वीडियो डाल दिया हूँ दीदी। बहुत अच्छा किया भारती भाई, थैंक यू। मुझे बहुत बहन लोग बोलती थी कि मैं आपको नहीं देखा हूँ भाई, तो मैं अपना इंस्टाग्राम से वीडियो उठाकर यूट्यूब पर डाल दिया हूँ
ताकि मुझे देखे और पहचाने। यदि मुझे पहचान रहेंगी तब ना मुझे खाने के लिए पूछेंगी। ऐसी बात नहीं है भारती भाई, देखो रिश्ता एक मान सम्मान होता है ना भाई, जो इंसान उसको जब कायम रखता है ना भाई, ऐसी बात नहीं है गहने पहचानेंगे नहीं। भाई बहन के रिश्ता जैसा कोई रिश्ता नहीं होता, समझे। बहुत अच्छा किए। आज छोटी सी रेख दिखाऊंगी, देखती हूँ क्या कहती हैं वीडियो देख के। मैं ऐसा ही मजाक कर रहा हूँ दीदी, मुझे पता भाई आप मजाक कर रहे हो, लेकिन अच्छा किए वीडियो डाल दिए। आज छोटी सी रेख दिखाऊंगी और उन्हीं से बोलूंगी तुम्हें लोग कमेंट करो। फिर से मेरे वीडियो के साथ भी खिलवाड़ कर दें। अरे नहीं भाई, खिलवाड़ नहीं करेंगे, डरो मत, खिलवाड़ नहीं करेंगे। खिलवाड़ नहीं करेंगे बोलती, अभी ये तो हमने कुछ किया नहीं है ना, नाम बिगाड़ेंगे अगर ना, फिर हम इनको बिगाड़ेंगे। आज अपने पापा से बता रही थी, वो हंस रहे थे, फोटो भी दिखा रही थी, कह रही है पापा आपको पता है भारती मामा ना हमको ऑटो स्टार्ट बोलते हैं, उनकी फोटो देख लो। वो हंस रहे थे देख के। दीदी मैं इतना समझ तक आसे बातें करता हूँ, फिर भी मुझे जाने का मन नहीं करता है दीदी। क्यों भारती भाई? मेरी दीदी सॉरी नहीं अनमोल भैया, सॉरी किस बात का? जय भीम भाई, सॉरी नहीं बोलते हैं, मेरे काम की वजह से मैं आपके लाइव में नहीं आता हूँ। कोई बात नहीं है भैया अनमोल भाई, कोई बात नहीं है, काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना अपने यादों में रखना कि बहन है कोई, बस इतनी काफ़ी है मेरे लिए। दीदी प्लीज़ बोलो ना, आप कैसे हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? प्लीज दीदी, मुझे माँ कसम मुझे रोना आ रहा है। क्यों भाई, क्यों अनमोल भाई रोना आ रहा है? सही में नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचते, रोना क्यों आ रहा है? रोना क्यों आ रहा है भाई बताओ ना, रोते नहीं है। मैं रो रहा हूँ क्यों? बात बताओ क्यों, बात क्या है, बात क्या है बताओ ना। प्लीज दीदी मैं आपकी क्या मदद करूं? बस रिश्ते ऐसे भाई बहन का हमेशा रहे, जो मान सम्मान देते हैं आप सदैव हमेशा ऐसा बना रहे, यही कामना, यही उपहार इस बहन का, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई, समझे। बहन के लिए
यही बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों की दुआ से इस बहन के पास सब कुछ है। देखो दीदी, मैं सही में आपको मैं मेरा बहन मानता हूँ। मुझे पता है भाई, आप मुझे बहन मानते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ दीदी, कुछ मदद करता हूँ ना। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ दीदी प्लीज़। नहीं भाई, अनमोल भाई, बस इस बहन के लिए यही उपहार की जगह रखे रहना बस, कि ऐसा भाई बहन का रिश्ता बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, किसी भाई से नहीं। जब ऐसी कभी सिचुएशन आएगी, ये बहन खुद ही बोलेगी। ऐसी सिचुएशन जिस दिन आ जाएगी ना, बहन खुद ही बोलेगी सभी भाइयों से, लेकिन अभी नहीं। दीदी सही में मैं भी अकेला हूँ दीदी, मेरी ज़िंदगी में मुझे भी समझाने वाला कोई नहीं दीदी। मैं समझती हूँ भाई, मुझे पता है, मुझे पता है, आपने एक बार बताए थे। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। अनमोल भैया, मुझे पता है, आपने एक बार लाइव में मेरे बता दिए थे बातें, मैं तब से आपको जानती हूँ, और अपने भाई की तरह समझाया भी था आपको उस दिन, और आप सभी मेरे भाई हो। नहीं नहीं भाई, आप गलत नहीं हो, बिल्कुल गलत नहीं हो। आप अपने पैरों से, अपने घर की ऐसी स्थितियों में से निकल के आप अपने पैरों पे खड़े हो, गलत किस लिए है? बिल्कुल नहीं भाई। एक लड़की को मैं आई लव यू बोला? अच्छा, कौन सी लड़की जिसको लाइव में बता रहे थे आप? वो लड़की यूपी से है, मैं गलत बोला क्या दीदी? देखो भाई, अब वो आप समझ सकते हो, मैं उसके बीच में क्या ही बोल सकती हूँ। अब वो आप जो कुछ भी किए होंगे अच्छा समझ के किए होंगे, पर मेरा मेरा मानना आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है भाई। सच्चाई आज के टाइम में ऐसी सच्चाई नहीं है अनमोल भाई। बैकग्राउंड में इंसान कुछ और होता है, सामने से कुछ और होता है, ऐसे नहीं यकीन करना चाहिए। मैं यही कहूँगी आपको, और बाकी आपका क्या मन है आप अपने मन से कर सकते हैं, इस दीदी को कोई एतराज नहीं है, आप अपने हिसाब से बेहतर ही करेंगे। दीदी मुझे आपका मोबाइल नंबर दो ना। अनमोल भैया, मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता भाई। मैं तो ना कोई इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ना कोई फेसबुक चलाती हूँ, मेरे 3-3 बच्चे हैं, स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते हैं, मैं अपने आप को अकेले संभाल लूँ वही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए बहुत पाबंदियाँ होती हैं अनमोल भैया, प्लीज़ आपका मोबाइल नंबर दो मुझे। दीदी भाई मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ भाई, बिल्कुल मानती हूँ अनमोल भैया, मैं सबको भाई मानती हूँ। मैं आज तक किसी को गलत शब्द से कभी यूज ही नहीं किया है। प्लीज दीदी प्लीज। मैं कैसे बताऊं भैया आपको, मैं हस्बैंड से पूछूंगी उसके बाद ही कुछ करूंगी, क्योंकि जानते हो जब ना ससुराल में रहो ना तो दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। आप मेरी फीलिंग को समझो। मैं हस्बैंड से पूछ लूंगी, अगर उनकी इजाजत रहेगी ना तो मैं फिर उनका नंबर ही दे दूंगी आपको, लेकिन बिना पूछे तो कुछ नहीं कर सकती। बाबा का फोन आया है, मैं बात करता हूँ दीदी। ओके भाई, ओके ओके भाई, अनमोल भाई कर लो बात।
नमो बुद्धाय जय भीम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भारती भाई। खाना बना लो। मैं प्याज काटती हूँ ना, मेरे आंसू नहीं रुकते, बहुत ज्यादा आते हैं। नीला सलाम, थैंक यू भाई। मेरे प्याज बहुत लगे हैं भारती भाई, बहुत ज्यादा। हाँ, आप अपना काम पर ध्यान दीजिए दीदी, मुझे पता है भाई, काम ही कर रही हूँ भारती भाई। आपको पता ही है कि मैं आपका लाइव चालू करके भी छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लाइव में हो। क्यों लड़ाई चल रही है बेटा? लड़ाई क्यों चल रही है? चोट लग जाएगी, रोने लग जाओगे अभी। और ऐसा किसी के लाइव में नहीं करता हूँ। मुझे पता है भारती भाई, मुझे पता, आप सभी भाई मुझसे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, ये मुझे मालूम है। पूजा लाइव में आती है या नहीं आती है दीदी? अभी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है काम की वजह से। कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। पूजा बहन नहीं आती है, मुझे पता है, मम्मी को ऑपरेशन हुआ है, सबकी सब लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। आप भाई वो चलो किसी तरीके से, चलो काम आप लोग अपना रहते हो, कर लेते हो, फ्री हो जाते हो थोड़ा। अब हम ही को जाना पड़ जाएगा, ऐसे तो नहीं इतनी टाइम मिल पाती है भाई। मैं अपने जैसे सबको समझती हूँ। मुझे देखे थे लाइव मैंने चालू कर दिया था, मैं बैठूंगी। मेरे ना बीपी जब लो होती है ना, तो नींद नहीं खुलती, आंखें नहीं खुलती। मैं सो गई। मैं फिर लाइव को ऐसे बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, कैमरा ऑफ करके फिर ऐसे मैंने सो गई। मैं उठी हूँ 6:30 बजे। हस्बैंड का टाइम हो गया ड्यूटी का। मैंने सिर्फ रोटी बनाई 5, वो चिकन उकन बनाए थे अपना, लेके फिर चले गए। तभी अभी खाना बना रही हूँ, नहीं तो मेरा खाना तो रोज हो जाता था। तो समय सब एक जैसे नहीं होता भाई। मैं भी पहले सबके लाइव में सपोर्ट कर देती थी, अब नहीं जा पाती हूँ क्योंकि फोन भी ज्यादा मुझे नहीं चलाना, फिर भी चला रही हूँ। इसके लिए हस्बैंड भी डांटते हैं। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ दीदी, मुझे पता है भाई। आप पढ़ाई साथ साथ खाना बनाना, सारा काम करना, पता है भारती भाई। सब पता है, लेकिन मैं अपने कामों को जल्दी निपटा देता हूँ। बंद कर दो। हाँ, बोल
आज मैं बहुत सारे कपड़ा धोया हूँ दीदी। इकट्ठा किए थे सारा क्या भैया? श्रेय और ये कैसी लड़ाई? सब्जी बना रही हूँ। कौन सी? मैं आज चिकन बना रहा हूँ भांजी, यदि खाना है तो जल्दी से आ जाओ। श्रेया नहीं खाती भाई, श्रेया नहीं खाते। शिवांशी साथ आपका साथ दे दे, वो कभी कभी खा लेती है अपने पापा के साथ, बाकी आकाश भी नहीं खाता।
मैंने कहा एक चॉकलेट लेके आ जाओ, बीपी बहुत लो है। अरे यहाँ किचन में भी नींद आ रही है। कौन सी? अब मैं जा रहा हूँ दीदी, बिल्कुल भाई बिल्कुल जाओ, भारती भाई आप बना लो खाना। बिस्किट नहीं बेटा, बिस्किट नहीं खाना है। आप खाती नहीं हो दीदी समय पर। कॉफी नहीं पीती ना बेटा मैं पी लिया ना। बाय बाय भाई, बाय बाय भारती भाई, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। खाना बना लो, मैं भी बना ही रही। मेरी तो आँख झप रही है भाई। बाय बाय।
Diyeceğim ben. Barcode scanner.
जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका, कैसे हो आप? हम ठीक, अभी रोटी खा रहे हैं। ओके भैया जी, खा लीजिए, हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल एग्जाम है उनका, वही उनका टेस्ट ले रहे हैं।
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। खाना पीना हुआ कि नहीं? मम्मी ये भी मेरे को एक वर्कशीट मिली, ये कौन सी है? अभी कहाँ, अभी ड्यूटी हो क्या? Is celebrated as the ड्यूटी हो? Independence Day in India. On this day in अभी यही हूँ। अच्छा 1947, भाई, India got its मैं भी बच्चों का काम करा रही हूँ। कल पेपर है, ऑनलाइन क्लास आ गई। अब उसको चूज करना, ऑनलाइन पेपर दिलाऊं कि ऑफलाइन दिलाऊं। is a national festival. बहुत मुश्किल हो रहा है दिल्ली में। Very happy. आप काम पर ध्यान दो। काम पे ही ध्यान दे रही हूँ भाई, उनका काम करा रही हूँ। पेपर है उनका कल।
like नमो बुद्धाय, जय भीम भैया, जय भीम। खाना हो गया आपका? the cow like green खाना हो गया भैया आपका? cow like green Green. mangoes are tasty. खाना 10 मिनट पहले खा चुके हैं। ओके भैया, थैंक यू। आपकी सेहत ठीक है? ठीक है भैया, आप कुछ तो आराम है, पहले से बहुत आराम है। Rustam girl has a street. आप बताइए, आप कैसे हैं? Rustam is a young अरे Rustam करता है। Parsi. और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं बड़े भैया जी? Rustam is young Parsi. Young. It is a bright day. Bright. Mumbai is a beautiful city. Beautiful. Do you see the blue sky? Blue. It is lovely, baby. Lovely. There is a yellow sunflower. Yellow. You may eat green mango. हम ठीक हैं। समय से पहले हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल भैया, बिल्कुल समय से पहले कोई कुछ नहीं कर सकता है, चलो मैं ना लेकिन इंसान थोड़ा सा परेशानी होती है तो दिक्कत होती है। 15th हाँ, सब लोग ठीक हैं। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। One day on this
जय भीम भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? गुणवंत भावी श्रीमली, स्वागत है भैया आपका, कैसे हो? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी बिजी हूँ, बच्चों का कल एग्जाम है, उन्हीं का रिवीजन करवा रही हूँ। कैसे हैं? खाना पीना हुआ आपका? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?